Assalamu alaikum dear students, welcome you all in class 8 chemistry video class. In previous videos we discussed important topics related to chemistry such as introduction, history and importance. Today you are going to learn about Muslim chemists. There are 4 Muslim chemists given in your books. Therefore you have to discuss these chemists one by one in detail. First of all, these chemists are given in your book on page number 3 and page number 4. Now you have to open the books, page number 3. Here you can see famous Muslim chemists. First one is known as Jabir ibn Hayyan. Duration is 721 to 803 AD. Jabir ibn Hayyan is generally known as the father of chemistry. He was probably the first scientist who had a well-established laboratories. He invented experimental methods such as distillation, sublimation, filtration, extraction of metal, etc. He prepared hydrochloric acid, nitric acid and white lead. Second important chemist was Muhammad ibn Zikriya al-Razi. Date is 864 to 930 AD. Al-Razi was a physician, chemist and a philosopher. He wrote 26 books, but the most famous book was Al-Asrar. In this book, he discussed the different processes of chemistry. He was the first chemist to divide the chemical compounds into 4 types and also divide the substances into living and non-living origin. He prepared alcohol by fermentation. Move on next page, page number 4. Here you can see Al-Biruni. Duration is 973 to 1048 AD. He made rich contributions in the field of physics, metaphysics, mathematics, geography, astronomy and history. In the field of chemistry, he understood the different chemical procedures and chemical combinations. He determined the densities of different substances. Fourth one is the Ibn Sina. Duration 980 to 1037 AD. Ibn Sina is generally known as Aristotle of the Muslim world. He is famous for his contributions in the field of medicines, mathematics, astronomy, medicinal chemistry and philosophy. He is the first scientist who rejected the idea that base metals can be converted into gold. He wrote more than 100 books. These books were taught in Europe for centuries. It is the data about these chemists given in your books. Dear students, you know, if you divide the data in different sections, then it becomes easier for you to learn these contributions. Now we have to discuss each chemist one by one. First of all is Abu Ali Sina. I divide the data in different headings. First one is biodata. Biodata you have to discuss name. Name of Abu Ali Sina is Abu Ali. Father name is Sina. Date of birth is 980 AD. Date of death is 1037 AD. This one is known as biodata of Abu Ali Sina. Next segment is achievement. Achievement means khidmat. उन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी in the field of chemistry. First one, he was called Aristotle of Muslim world. Aristotle means Arastu. उसको मुस्लिम दुनिया का अरस्तु भी कहते हैं because of great knowledge contributed by this chemist. Second one, he was a very good doctor. Chemist के साथ साथ वो physician भी था, doctor भी था. He was the first to reject that idea base metals can be converted into gold. ये पहला केमिस्ट था जिसने इस आइडिया को रिजेक्ट किया कि बेस मेटल्स को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड हेडिंग इज नोन एज एकेडमिक एक्सपर्टीज. ही वॉज एट द टाइम डॉक्टर, केमिस्ट, फिलोसफर एंड एस्ट्रोनॉमर. एक ही वक्त में वो डॉक्टर भी था, केमिस्ट भी था, फिलोसफर भी था और एस्ट्रोनॉमर भी था. ये हैं उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स. नाउ द बुक्स रिटन बाय दिस केमिस्ट. He wrote more than 100 books. Among followings are very much famous. One is Book of Heating, second Canon of Medicine, third Life of Ibn Sina. It means by dividing the
categories of each chemist into different segments, it becomes very easy for you to learn the biodata of these chemists. Second chemist, according to your books, is Al-Biruni. Now we have to discuss Al-Biruni. First one is biodata of Al-Biruni. कि Al-Biruni का biodata क्या है? Name is Abu Rahman Muhammad. Father name is Ahmad Al-Biruni. Date of birth is 973 AD. Date of death is 1048 AD. This one is known as biodata of Al-Biruni. Second, achievement. उन्होंने क्या achievement की? He was called Wadia Sagas. Wadia means knowledge and Sagas means ocean. इसका मतलब है कि it is also known as ocean of knowledge because of great contributions given by Al-Biruni in the field of chemistry. He was also known as Wadia Sagas or ocean of knowledge. Second, he determined densities of various substances. What are densities? Mass per unit volume is known as density, and for the first time he determined densities in laboratories. Third, he was a seasoned chemist. It means he was a chemist at that time. Last one, he traveled far and wide to receive knowledge. उसने मुख्तलिफ जगह का सफ़र किया in order to get more and more knowledge. Second heading is academic expertise. He contributed in many fields like mathematics, physics, chemistry, geography, and history. Famous books given by this chemist are Kitabul Hind, Kitabul Nasudi and Kitabul Ashrat. ये फेमस बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी और लिखने के बाद ये बुक्स जो हैं आज तक मुख्तलिफ कंट्रीज़ में टीच की जाती हैं. उसके बाद हमारा केमिस्ट है जाबिर इब्न हैयान. जाबिर इब्न हैयान का बायोडेटा क्या है? उसका नेम है जाबर. फादर नेम है हैयान. डेट ऑफ बर्थ है 721 AD. डेट ऑफ डेथ इज 803 AD. अचीवमेंट, उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट केमिस्ट्री के फील्ड में की? फर्स्ट वन, ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री. उनको केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम he made chemistry as a practical or experimental subject and established laboratories as well as laboratories instrument. Due to this reason, he was also known as father of chemistry. Second, he had well-established and equipped laboratory. Well-established and equipped means ना सिर्फ उन्होंने लेबॉर्ट्रीज बनाई बल्कि इक्विपमेंट कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो हम लेबॉर्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाते हैं. उन्होंने लेबॉर्ट्री के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाए जो आजकल हम लोग लेबॉर्ट्री में यूज़ कर रहे हैं. थर्ड, ही इन्वेंटेड मैनी केमिकल प्रोसीजर्स. उन्होंने बहुत सारे केमिकल मेथड्स, प्रोसीजर कहते हैं मेथड्स, उन्होंने बहुत सारे केमिकल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जिनमें वेल नोन जो हैं वो हैं डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, filtration and extraction of metals. Then next, he invented hydrochloric acid, nitric acid and white lead. Not only established laboratory but also introduced different types of laboratory instruments, laboratory procedures. Well-known procedures he introduced were distillation, sublimation, filtration, and also prepared artificially large number of acid, bases and other substances including hydrochloric acid, nitric acid and white lead. We already discussed these topics in video 2. Famous books written by Jabir ibn Hayyan were, he wrote more than 112 books. Many were translated in Latin and English. बहुत सारी बुक्स को लातीनी और इंग्लिश ज़बान में ट्रांसलेट किया गया. मैनी वर टॉट इन यूरोप फॉर सेंचुरीज. बहुत सारी बुक्स जो है सेंचुरीज तक यूरोप के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती रहीं. मेन बुक्स, उनकी मेन बुक्स कौन कौन सी हैं? अल हैवान, सेकेंड वन इज़ अल नबातात, थर्ड वन इज़ अल अहजर एंड फोर्थ वन इज़ कीमिया ऑफ जाबिर. ये उसकी वेल नोन बुक्स हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, जिनकी ट्रांसलेशन की गई और सेंचुरीज तक इनको यूरोपियन कंट्रीज़ में पढ़ाया गया. उसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज़ नोन एज
मोहम्मद इब्ने ज़िक्रिया। इंट्रोडक्शन में हम इसका नेम मोहम्मद, फादर नेम ज़करिया, डेट ऑफ बर्थ 864 AD, डेट ऑफ डेथ 930 AD, अचीवमेंट्स डन बाय दिस केमिस्ट, ही वॉज अ स्किलफुल सर्जन, स्किलफुल कहते हैं एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट सर्जन था। ही यूज ऑपियम एज एनेस्थेटिक, ऑपियम क्या है, ऑपियम हम अफीम को कहते हैं, एनेस्थेटिक कहते हैं नशा। इससे पहले जब सर्जरी की जाती थी तो वो बहुत पेनफुल अमल होता था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जाबिर इब्ने हयान ने ऑपियम को इंट्रोड्यूस करवाया एज एनेस्थेटिक। इसका ये मतलब है कि अगर सर्जरी से पहले हम ऑपियम को यूज़ कर लें तो सर्जरी की जो पेन्स होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि एनेस्थेटिक कहते हैं लेने के बाद इंसान थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए। इन डेड केस पेन जो हैं ये हम लोग कम कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। थर्ड कंट्रीब्यूशन डन बाय हिम, ही डिफ्रेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उन्होंने सबसे पहले जितनी भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट द यूनिवर्स इनको डिवाइड किया दो कैटेगरीज में, लिविंग एंड नॉन लिविंग, and still now we are dividing the substances present in the universe into two main groups in junior classes in general science, living things and non-living things. The idea was given by Muhammad ibn Zikriya. 4 number point, he prepared alcohol by fermentation. फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज़ द सेकेंड नेम फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के अल्कोहल जो हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया बना सकते हैं। एकेडमिक एक्सपर्टीज इसकी क्या है? ही वॉज एट अ टाइम फिलोसफर, फिजिशियन, कॉस्मोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट। इसमें एक नई टर्म आई है कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं इल्म फल्कियात, ये इल्म फल्कियात की एक ब्रांच है। एंड इन दिस ब्रांच वी स्टडी सन, स्टार, प्लैनेट एटसेट्रा। एंड यू ऑलरेडी नो केमिस्ट मीन्स द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। What are the famous books written by him? He wrote 26 books. Many were taught in European countries for centuries. Some books are Al-Hawi. Al-Hawi क्या है? Al-Hawi is a book in which he discussed various types of methods to prepare medicines. Second one, Doubts of Golem. Third one is Al-Asrar. Al-Asrar is also very famous book of Al-Razi, in which he discussed various processes of chemistry. Processes कहते हैं procedures. It means in this case we divide paragraphs of Muslim chemists into different types of segment, different types of paragraphs into different types of points in order to get maximum knowledge in minimum time. In this way presentation become well looking and also it become very easy for you to learn the topics clearly. It means you can learn these things easily by using these data which is given by you, and I am also sharing these pages with you. Dear students, hope आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे, एक बार समझ नहीं आती, सेकंड बार देखें, सेकंड टाइम समझ नहीं आती, थर्ड बार देखें, and language is very very easy. Inshallah we will meet in next video with new topics, that is branches of chemistry. Till that, Allah Hafiz, God bless you.